Hello everyone, good morning. I hope you are fine. Today we are starting our next class of electromagnetic induction unit 4. Okay, then first we are telling about this one, what is in this unit, some basic of this unit. So electromagnetic induction, there we are telling about this one phenomena, then it is a phenomena in which magnetic flux will change. As magnetic flux will change, then EMF will be induced there. So this phenomena is known as the induced EMF. In first unit we have done a charge will be flow there, then current will be there. Okay, due to the flow of the charge per unit time we can call it current, and current will be there, then surrounding there magnetic field will be created. Okay, now if your magnetic flux is there and we are changing this magnetic flux, as magnetic flux will change, then your EMF will induce, and this induction of the EMF and induced current, this phenomena is known as the electromagnetic induction. Okay, so this one phenomena first told by the Faraday. Who told? Faraday. Faraday given two laws, Faraday's first laws and here Faraday's second law. Second law Faraday's and Faraday's second law. Okay, in first law told about this one, current will induced, EMF will induced when your magnetic flux will change. This theoretical concept given by in the first law of the Faraday. Faraday क्या है? Faraday is the name of the person who told about this one electromagnetic induction first time. So this one is a phenomena in which your EMF will induced by changing magnetic flux, that is known as the Faraday first law, and second law, that is a mathematical equation of the first law told in your सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में क्या है, जस्ट जो फर्स्ट लॉ जो एक्सप्लेन किया गया उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या थी, सेकंड लॉ में डिफाइन की गई थी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ E इक्वल टू यर माइनस d∅/dt. दिस वन इज नोन एज द फैराडे सेकंड लॉ. Clear? And this one negative is indicating for the direction of the induced current, induced EMF. ये induced EMF है, अगर current आपको find करना, then we know about this one V equal to IR. So here I we can write there 1/R d∅/dt. Then here minus is indicating direction of the induced EMF, and this one direction we can explain with help of that law, and this law is known as the Lenz's law. What? This law is known as the Lenz's law. Okay, so this one is a basic of this chapter. In this one we will create a EMF induced by changing a flux, and flux is a depend upon the different factor, on which factor, that phi equal to your BA cos theta. This one our flux, and theta we can write there BA cos omega t. Clear? So if your this one your induced EMF depend upon your change in flux per unit time, so flux will be depend upon these different factor. If magnetic field will change, then EMF will induce there. If area will change, then again EMF will induce there, and omega t will change, then again EMF will be induced there. So out of these different terms, any one factor will be changed, then EMF will be induced, but condition it should be change. ये change होना चाहिए with respect to time. If it is constant only, then their EMF will not induced. Okay, so using this one basic, now we will see our some PYQs of this chapter. Now see first question. Two coils are placed near with each other. Two coils kept with each other. When the current in one coil is rate of 5 ampere per second. 5 ampere per second. This one given means where we can write there given factors. First value क्या given है, 5 ampere per second. Ampere per second means di/dt given. Okay, I/t given. Now an EMF 2 millivolt is induced in the another, then find the mutual induction of the two coils. Mutual induction we have to find out. क्या क्या given आपको, EMF given है E equal to your 2 millivolt. We have to convert into SI unit. So SI unit we will convert, then we can write there 2 into 10 raised to power minus 3 volt. 2 into 10 raised to power minus 3 volt. This one your EMF equal to this one. Now here mutual induction M we have to find out. So as we know, using these terms, then we have to find out mutual induction. Then we know about this one, phi is directly proportional to I, and for mutual induction this one constant we will take, that is your M only. सो आपको क्वेश्चंस के अंदर क्या गिवन है, ई वी कैन राइट देयर, ईएमएफ गिवन है, ये हमारे पास फाई आ गया, तो ईएमएफ वी कैन राइट देयर इक्वल टू ईयर
माइनस डी फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया, ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. So I by t given. So here we can write there phi, we can write there mi, d by dt mi. So m is constant, we can take outside, then here left di by dt. तो di by dt हमारे क्वेश्चंस में गिवन है, तो क्या निकालना हमें, m निकालना है. ऑलरेडी e already given. So using this formula can we find here m? So using this one, e equal to your m di by dt. So m we can write there m equal to e into your dt by di. Now m equal to e equal to, what is e? E equal to your 2 millivolt, 2 into 10 raised to power minus 3 into di by dt. Di by dt we can write there 1 by 5. Okay, because di by dt is 5 and dt by di equal to 1 by 5. So here we can write there, solve it, then here we can write there 0.4. When we will cancel this one, then here will be a 0.4 into 10 raised to power minus 3. So minus 3 we can write there milli, 0.4 into your milli. What is the SI unit of the mutual induction? That is your Henry. So this one in our M came. Now which one is the right option? This one here we are using just our Faraday law only, induced EMF. Induced EMF E equal to d by phi by dt, phi by dt. So mutual induction we know about this one. In mutual induction means two coil are mutually connected with each other. अगर एक के अंदर करंट पास किया जाए तो दूसरी कोयल के अंदर अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाएगा. दिस मेथड इज नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन. तो इस मेथड के बिहाफ से हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या आ जाती है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आई. जैसे हमारा करंट चेंज होगा वैसे ही फ्लक्स में वेरिएशन आएगा. सो फ्लक्स विल चेंज, देन चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम, दैट इज योर directly proportional to the induced EMF. Then using this one terms, then here we can write there M. So check here which one is right option here. First one only right option, 0.4 millihenry of this question. Now see our next question. Question number 2. Now in a coil of resistance is 100 ohm, a current is induced by changing a magnetic flux through it. ये कह रहा है कोयल है जिसका रेजिस्टेंस क्या गिवन आपको 100 ओम. Given value we are writing there, given your R equal to your 100 ohm. क्या given है, R equal to your 100 ohm is induced by changing a magnetic flux through it. By changing a magnet, then the variation of current with current as shown in figure. Then magnitude of change in flux we have to find out. Magnitude of change in flux. Magnitude of change in flux we have to find out. D phi by we have to find out. So using this one graph, how we can find it? Now as we know, then your E equal to your d phi by dt. We can write it d phi by dt. D phi हमें निकालना है. R value is given here. Okay, so using this one E, then here we can convert there by using Ohm's law. Then can we write there IR equal to dt? This one here by using Ohm's law, your E equal to your IR, because R given हमें और ग्राफ given है I और T के लिए. So हमें E को क्या है IR की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया by using Ohm's law. So E equal to IR. Then here this one here just d phi by dt only as it is. Now dt we can write this side, then R constant, I dt equal to your d phi. ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, d phi निकालना है. So d phi equal to R I dt by R given हमारे क्वेश्चन में क्या given है 100 ohm. I dt left. Now graph of I t given already. So if you want to multiply this into this, then how we can do this one? Here two terms are there in graph. Using graph, one we can find the slope. Slope how we can find change along x to y. Change along your ratio of your y axis to the x axis. So y to y x क्या देगा हमें? di by dt. di by dt. This one your slope. But here need of di by dt. No, here need of I dt. I into multiple of this one. So for multiple means this into this you want, then we can find their area under the curve. Means here
I dt we can find there by using area under the curve. Area under the curve in IT graph. In IT graph. Okay, so I dt, then area under the curve, this one area under the curve, this one area. Okay, and this one our right triangle, then I dt we can write there half base into height. Base will be equal to this one 0.5 into your height. Height will be equal to your 10 ampere. So solving this one, then here we can write there 5 by 10 into your 2 into 10. Remove this point, then downside we can write there 10. Then here 10 to 10 cancel out, then here left here 2.5 here I dt, and it means here you can write there ampere second. क्लियर? तो आई डी टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई. सो हेयर वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड कर रहे थे यहाँ पे, d5 वी आर फाइंडिंग हेयर. सो हेयर पुट वैल्यू ऑफ आई डी टी फ्रॉम हेयर. आई डी टी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, यहाँ से पुट करके यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास d5 क्या आ जाएगा, d5 निकालना था r इंटू यर d5 इक्वल टू यर 2.5. सो r गिवन यूर 100 इंटू यर 2.5. Okay, so here point, remove this one point, then here we can write there 10, 10 10 cancel out, then here will be a 250 Weber. SI unit of the flux is equal to Weber. Okay, so हमारे पास flux क्या आ जाएगा, flux ही find करना था, that is a magnitude of change in flux through this coil. So flux change in flux हमारे पास क्या आ गया 250. So which one is right option? This one D is right option of our question. So I hope you understood beta. Just we have to follow your Faraday law only. This is an important law and you have to learn this formula properly beta. E equal to d5 by dt. इसके बाद as need in our question, then we can change our questions according to our requirement. So D will be right option of this one question. Now next question, question number 3. A thin diamagnetic rod is placed vertically between the poles of an electromagnet. When the current is the electromagnet is switched on, then the diamagnetic rod is pushed up. ये कह रहा है कि एक thin diamagnetic rod है placed on vertical between the poles of the electromagnetic. इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल्स के बीच में क्या है, डायमैग्नेटिक रोड रखी गई है. और जब व्हेन द करंट इज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज स्विच्ड ऑन, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर करंट अगर हमने स्विच ऑन कर दिया, तब कह रहा है डायटोमिक रोड इज पुश्ड अप. जो डायमैग्नेटिक रोड है वो क्या होगी, पुश्ड अप, वो ऊपर की तरफ उठ गई. तो कह रहा है आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उनके अंदर से. कि अगर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स आर गिवन, one pole is this one pole is this one. Okay, then here this one we are connecting with our electric source, then between them kept a vertical rod, vertical diamagnetic rod, and as we are current passing through these rods, then here road we are connecting, then due to the presence of the electric current and there this one road is pushed up, hence the road gains gravitational potential energy. जो रोड है वो क्या है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेती है. मींस जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. तो वर्क डन रिक्वायर्ड टू डू दिस कम्स फ्रॉम बाय विच वन सोर्स. जो ये वर्क कर रही है रोड जो ऊपर की तरफ उठ रही है, किसकी वजह से उठी हुई है, रीजन हियर आस्क्ड देयर. ओके, कि जो रोड है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका एनर्जी है उससे उसमें किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया. कन्वर्ट करने के बाद दैट वर्क विल बी डन बाय दिस रोड एंड इट इज शिफ्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस वन वर्क डन बाय विच वन रीजन, ये रीजन आस्क्ड. So here first one only option, right option, current source, because this one as we are applying their current through these electromagnetics poles, then this one starts shifting in upward direction. तो main reason क्या रहेगा इस वर्क का, current source, not your main magnetic field, not only this one. Okay, so your first will be right option of this one question. Now see our next question, question number 4. A self inductance of a solenoid of 600 turns is your 108 millihenry. Okay, 108 millihenry.
then the self inductance of the coil having 500 turns with the same length and the same radius and same medium will be. Self inductance beta our there is a two important applications of your induced EMF induced current, that is self inductance and the mutual inductance. Self inductance क्या होता है? That is a inductance which is created due to the current changing, flux changing in its same cell, same coil. ओके जिस कोयल के अंदर हम करंट पास करते हैं उसी के अंदर इंड्यूस्ड करंट होना, दैट इज नोन एज द सेल्फ इंडक्टेंस. ओके दिस वन इज सिंबल इज योर एल ओनली, इट्स सिंबल इज एल ओनली. तो हमें क्या फाइंड करना है? एल ही फाइंड करना है. दिस वन जस्ट एल वी हैव टू फाइंड आउट. क्या गिवन आपको? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कोयल सोलिनोइड जिसकी कितनी टर्न्स है? 600 टर्न्स एंड इज इक्वल टू योर मिली हेनरी. गिवन ऑलरेडी, नॉट फाइंड आउट, गिवन. This one L equal to here, L equal to 10 millihenry, 10 millihenry, and turns, number of turns given equal to here 600 turns. क्या given है? 600 turns. Here then the self inductance of the coil having 500 turns. Here we are taking cases L1, L2. Next case में कह रहा है कि अगर इसकी coil को 500 turns मीन्स जो कोयल है उनकी जो नंबर है, नंबर ऑफ कोयल्स वी आर चेंजिंग इनटू योर 500 मीन्स वी कैन राइट देयर N2 इक्वल टू आवर 500 टर्न्स, 500 टर्न्स विद द सेम लेंथ, रेडियस एंड सेम मीडियम विल बी. ऑप्शंस आर गिवन दीज. देन L2 वी हैव टू फाइंड आउट. So how we can find? First we should know about the relation for it. Then as we know that L is equal to, as we know L equal to your mu naught n square A by L. This one is an important formula of the self inductance. It is a depend upon the number of turns, not depend upon the current. ये ध्यान रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि करंट पे कैसे डिपेंड करता है L. तो करंट पे डिपेंड नहीं करता है L, डिपेंड करता है सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ द कोयल एंड लेंथ ऑफ द कोयल्स. ओके ऑन दीज फैक्टर विल बी डिपेंड एंड योर नंबर ऑफ कोयल्स पे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स. नॉट ओनली number of turns, it is a square of the number of turns and directly proportional to area and inversely proportional to the length. So L we can write here this one. Now for the first case, now for case 1, so here we can write there L1 mu naught n1 square A1 then divide by your L1. So L1 we can write there 108 millihenry. 108 millihenry means here minus 3. Mu naught equal to your 4 pi into 10 raised to power 4 pi into 10 raised to power minus 7. Otherwise we can keep as it is only because ratio we have to find out. So we will cancel it as it is. Mu naught n1 equal to your 600 turns into your 600 and into your A1 by your L1. This one our first equation. Now using next one factor case 2. For case 2, so here we can write there L2 equal to mu naught n2 square A2 L1 L2. Clear? So L2 we have to find out, mu naught keep as it is constant only, and n2 we can write there 500 into your 500 into your A2. A2 we can write there as it is divided by your L2. Clear? So ये first equation आ गई आपकी, second equation आ गई. Clear? Now using this one your L2 equal to mu naught into your 500 into your 500 A2 by your L2. Next here 108 into 10 raised to power minus 3 divided by your mu naught into your 600 A1 by your L1. कि हमें L2 चाहिए, दोनों का रेशियो निकाल दिया, इक्वेशन डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट. तो हमें पता है दैट एज गिवन इन योर क्वेश्चन सेम लेंथ एंड सेम रेडियस मींस योर लेंथ एंड एरिया ऑफ बोथ केसेस विल बी रिमेन सेम. ओके so if ratio we are finding, then this one factor will cancel with each other, 0 0 cancel with each other,
here 0, these two 0 cancel with like this one, mu naught cancel with each other. So here left here L2 equal to, here left L2 divide by 108 into 10 raised to power minus 3 equal to, here 5 into 5 25 we can write there, and 6 into 6 we can write there 36. Clear? So L2 we can write there, L2 we can write there 25 into 36 into 108 into 10 raised to power minus 3. Okay, so 12 3 ja 36, 12 9 ja. Now 3 3 ja, now 35 and 75 into 10 raised to power minus 3. तो L2 हमारे पास क्या आ गया, ये हेनरी. L की यूनिट क्या होती है, हेनरी. मिली में आपके आंसर से, सो वी कैन राइट देयर दिस वन हियर 75 मिली हेनरी, बिकॉज 10 raised to power minus 3 or milli henry only, so here will be 75 milli henry. So which one, check your option, this one 95 90 85 75, D will be right option of this one question. Clear? So I hope you understood beta. First read your statement carefully, after that think which formula you can use here for find out this one. ओके जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो उसके अंदर क्या गिवन जो क्वांटिटीज है आपकी वो उसके साथ मैच हो रही नहीं हो रही. क्लियर? सो हियर नंबर ऑफ टर्न्स आर गिवन. सो एल का फॉर्मूला हमने यूज किया जो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है. तो एल कैसे डिपेंड करता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल ऐसे डिपेंड करता है. तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या है हमारा, दिस वन इज अ रेशियो, दिस वन लाइक दिस वन रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मिली हेनरी. तो L2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 75 मिली हेनरी. कि सेल्फ इंडक्टेंस एक सोलिनॉइड है जिसके अंदर 600 टर्न्स है, जिसका इंडक्टेंस ये है, अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स को 500 कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, तो नया इंडक्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा नए वाला क्या हो जाएगा 75 मिली हेनरी, और जिसका इनिशियल क्या था 108 milli henry. Okay, so as change number of turns, then it also will be changed. Now see next question, current in the primary coil of a pair of coil changes from this to this. ये कह रहे हैं कि प्राइमरी कोयल है, प्राइमरी कोयल क्या होती है, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर बेटा दो कोयल होती है. म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होती है, टू कोयल्स होती है. वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज योर सेकेंडरी कोयल. दिस वन योर सेकेंडरी, दिस वन प्राइमरी कोयल and this one secondary coil. So here we are passing the current through it. इसके अंदर करंट पास किया जाता है, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है. This one here primary, this one secondary coil. ये कह रहा है कि करंट इन द प्राइमरी कोयल ऑफ अ पेपर ऑफ द कोयल, पेयर ऑफ द कोयल, देन 7 एम्पियर टू योर 3 एम्पियर विद इन 0.4. तो करंट कैसे चेंज हो रहा है, चेंज इन करंट, दिस वन डेल आई गिवन ऑलरेडी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इज 3 माइनस here 7, so it will be your minus 4 एम्पियर. क्लियर? सो हम क्या यूज कर रहे हैं, dt, पॉजिटिव वैल्यू वी कैन राइट देयर हियर. di positive value, so we can write there minus 4 positive, then here we can write there 4 ampere. Now in this one second 0.04, टाइम क्या गिवन हमारे पास 0.04 सेकेंड. Then the mutual inductance between the coil is 0.5 Henry. Mutual inductance M given आपको, L नहीं M given है, M equal to 0.5 Henry. Then the induced EMF in the secondary coil, induced EMF in the secondary coil, E we have to find out, E. Mutual inductance EMF in the secondary coil we have to find out, E we have to find out. So how we can find there? So as we know that phi equal to your Mi, ये given है. Clear? Induced EMF हमें निकालना, तो using this formula can we write there d phi by dt. तो mutual inductance के लिए हम क्या रख देंगे, M d phi by dt. Sorry, I, not phi, it's I. We change na phi equal to mi, तो m constant we take out this one. So di given है आपके पास, I given है, m already given, तो induced direct formula है आपके पास, we can use it. E equal to m equal to 0.5 Henry
into your di equal to your 4 ampere and dt equal to this one your time given here 0.04 second. क्लियर? सो यहां से हम क्या निकालेंगे? पॉइंट्स वी कैन रिमूव इट. 0.04 upper side 100 we can write and down side remove this point, then here 10 we can write there into your 4. So 4 to 4 cancel out, 10 to 10, then here left your 50 volt. So check your answer. First only right option of this one question. क्लियर? तो अकॉर्डिंग देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक ये फॉर्मूला और भी होता है, m इक्वल टू म्यू नोट n1 n2 a by your l, like this one l इक्वल टू म्यू नोट n स्क्वायर a by l. बट ये हम कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात कर रहे हो देन वी कैन यूज दिस वन. बट यहाँ तो करंट गिवन है तब वो इंडस्ट्री ईएमएफ पूछ रहा है, तो इंडस्ट्री ईएमएफ के पास तो हमारे पास यही एक रिलेशन है. इसी रिलेशन को यूज करते हुए हमें एम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो एम की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 50 वोल्ट. ओके, नाउ यूर हियर ए विल बी राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. A circular coil of radius is 8 cm and 40 turns is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 25 by pi radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 raised to power minus 2 Tesla. Then the maximum induced EMF in the coil is. Maximum induced EMF we have to find out. So given क्या क्या quantities हमें given है? Given quantities, then here first radius given, are given here 8 centimeter. So 8 we have to convert into meter, 0.08 meter. Number of turns n equal to here 40. N equal to 40 is rotated about its vertical diameter of angular speed omega equal to 25 by pi radian per second. In a uniform horizontal magnetic field of magnitude b equal to 3 into 10 raised to power minus 2 Tesla. इसके बाद EMF हमें निकालना है, EMF. क्लियर? तो EMF के लिए हम क्या करेंगे? EMF निकालने के लिए E equal to this one. So we know about this one EMF. अगर हम रोटेशनल फॉर्म है, रोटेशनल फॉर्म में ईएमएफ निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है NBA ओमेगा. मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम कह रहा है ना, मैक्सिमम के लिए आते हैं. एक्चुअल में कंप्लीट क्या होता है ये फॉर्मूला? E इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा t. क्लियर? कहां से आता है ये हमारा आता है. देन वी नो अबाउट दिस वन E इक्वल टू d5 by dt and 5 we can write there ba cos omega t. अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था फाई का फॉर्मूला ba cos omega t. तो b हमारे पास क्या कांस्टेंट? इस केस के अंदर क्या हो रहा है? थीटा वेरी कर रहा है, रोटेशनल इज टेक प्लेस. तो थीटा वेरी करेगा. दिस वन वी कैन टेक देयर ba कांस्टेंट, देन इनसाइड लेफ्ट d by dt एंड हियर cos omega t. क्लियर? तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हमारे पास dt का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा टी ऑफ कोस का साइन ओमेगा टी. एंगल का डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा. सो ओमेगा वी कैन राइट हियर ओमेगा bm. क्लियर? तो इफ n नंबर ऑफ टर्न्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो n के लिए हमारे पास क्या आ जाए? मल्टीप्लाई विद n, देन इट्स फॉर्मूला बिकम योर NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी. क्लियर? तो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा? दिस वन योर मैक्सिमम. मैक्सिमम का मीनिंग क्या रहेगा? थीटा हमारा 90 हो जाए, और 90 हो जाएगा तो हमारे पास साइन 90 क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा हमारे पास? NBA ओमेगा आ जाएगा. क्लियर? तो हमारे पास क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना. क्या क्या गिवन है? गिवन टर्म्स हम यहाँ यूज कर सकते हैं. E इक्वल टू योर n गिवन ऑलरेडी इन आवर क्वेश्चन 40 into your B magnetic field given हमारे पास 3 into 10 raised to power minus 2 Tesla. And area is not given, radius given, but we can write their area pi r square. We can find the area pi r square. So pi your r given here 0.08 whole square, then it will become here 0.0064 pi square.
this one your meter square. Here area we can write there 0.0064 pi square into here, just we can erase this one. Now what left here? Omega, area done, written, area value written, and BA omega left, then omega given here 25 by pi. So here we can write it 25 by pi, 25 by pi. To pi one cancel out. So here EMF E equal to here 40 into 3 into 10 raised to power minus 2 into here 64 divided by here 40, remove this one point, then 40 we can write here 25. Okay, this one pi to pi r square used na, here pi r square this one, and it is here area pi r square 25, pi to pi cancel out, now this one left. Now solve it, remaining portion. Here this one we can write 10 to 10 cancel out. Now 440, then here we can write there 1 10, then here 2 5 ja, then here 3 2 32. Our came value here E equal to, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, E equal to 3 2 just 6 we can write there, 3 3 just 9 divide by your 5 into your 10 raised to power minus 2. Okay, so solve it, then here we can write there 5 1 ja 5 4, then here 5 9 ja 45.2 into 10 raised to power minus 2. Clear? EMF this one volt. So here point में given है, this 10 raised to power minus 2 को remove करना पड़ेगा, this one 10 raised to power minus 2 we are taking, then 0.2 इधर शिफ्ट करना पड़ेगा. So EMF हमारे पास क्या आ जाएगा 0.19. अगर इसको 0.2 इधर शिफ्ट कर देते हैं, so here this one which one is right option here? C will be right option of this question, 0.19. ओके, सो आवर 3 फैक्टर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट करने का मेन रीजन क्या होता है? फ्लक्स शुड बी चेंज. तो फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है? तो बी को चेंज करो या एरिया को चेंज करो या फिर एंगल चेंज करो. क्लियर? तो अगर हम क्या करते हैं, एरिया चेंज करते हैं, देन आवर इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला विल बिकम BLV इफ योर एरिया विल चेंज. ओके, स्लाइड करते हैं बॉडी को इधर उधर. इफ योर ईएमएफ एंगल विल चेंज, देन इट्स फॉर्मूला विल बी NBA omega sin omega t. Keep in mind these both formula of the induced EMF. Okay, now see next question. Question number 7. Figure shows a rectangular conductor PSQR. This one figure given. इसके अंदर क्या है? मूवेबल आर्म PQ साइड क्या मूवेबल है, जिसका रेजिस्टेंस R है, then PSQ negligible, then magnitude of EMF induced when PQ is moved with the velocity does not depend. ये कह रहा है we have not find out anything, just we have to tell on which factor this movable side is not depend, कि जिसके ऊपर क्या है जो EMF induced हो रहा है वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. नाउ वी विल चेक दीज ऑप्शंस. First your magnetic field. Now induced EMF we know about this one d phi by dt. क्या होता है d phi by dt? तो induced EMF d phi by dt we can write there BA cos omega t. This one is a complete formula. Clear? तो किस पे डिपेंड करते हैं? एक तो B पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तो हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा. सेकंड, अगर B कांस्टेंट है तो किस पे डिपेंड करेगा? एरिया पे डिपेंड करेगा. अगर इसको इधर उधर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? आपका एरिया चेंज हो जाएगा, और चेंज इन एरिया अगर निकालते तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो क्या आता है? BLV. As we are changing the area, then it will be equal to BLV. So depend upon the velocity also. B पे भी depend करता है, velocity पे भी depend करता है. Now length also depend upon length also. Length पे भी depend करता है कंडक्टर की length क्या है. Now left only resistance, not depend upon the resistance of the conductor. जो जिस साइड को हम मूव कर रहे हैं उसके कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है. Then it is a depend on remaining all 3 factors.
Okay, so here will be right option will be your C only. Now see next question. Here question number 8, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एबीसी. एबीसी के अंदर हमें डायरेक्शन निकालनी है, तो हमें डायरेक्शन के लिए इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए जो लो हम यूज करते हैं दैट इज योर लेंज लो. विच लो? लेंज लो. ये लो क्या कहता है कि दिस वन डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज विल बी अपोज ऑफ इट्स कॉज, जिसकी वजह से ये करंट बनता है. विच करंट? इंड्यूस्ड करंट. जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट आपका बनता है उसका अपोज करे, इस तरीके से ये इसकी डायरेक्शन हो. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी जिसकी वजह से वो बन रहा है उसका वो अपोज करे. ओके, दिस वन नोन एज द लेंज लो. क्लियर? सो यहाँ पे जो इसके अंदर ये कह रहा है कि देन इंड्यूस्ड करंट इन द लूप एबीसी, जो लूप है आपका उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें बतानी है. तो कह रहा है कि अलोंग एबीसी इफ आई डिक्रीज, अलोंग एसीबी इफ आई इंक्रीज, एबीसी इफ आई कांस्टेंट एंड दिस वन विल इंक्रीज. तो करंट की डायरेक्शन हमें ये गिवन है. तो मींस करंट अगर इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है तो हमारे अंदर इस लूप के अंदर करंट ऐसे होगा जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है उसका अपोज करे. ओके, इधर करंट क्या कर रहा है? इंक्रीज करेगा, तो इसका अपनी खुद की डायरेक्शन को वो ऐसे रखेगा कि इसका अपोज रखे. ओके, अपोज कैसे करेगा? मींस इट्स कीप इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट. ओके, जिस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है उससे अपोजिट अगर डायरेक्शन रखेगा तो उसका क्या होगा? अपोज होगा. वो करंट को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा. तो अपोज करने के लिए खुद की डायरेक्शन को ऐसे रखेगा. तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी? B C A B, like this one direction will be there. Now check here, like this one not given. Here we can write from A से start करा, so here we can write there A B C. This one order ना, like this order. So this one order we can write there A B C only. A B C. This one A B C A B C A B C. यहाँ भी 3 options है. 3 में से अब ये कह रहा है if I increase decrease constant. constant तो होगा तो क्या होगा? फ्लक्स से इंड्यूस नहीं होगा. यस ना, करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन नॉट देयर. करंट इंक्रीज कर रहा है इधर की तरफ, तब हमारी डायरेक्शन क्या आई है? एबीसी आई है. तो करंट आई इंक्रीज करेगा तब हमारे पास डायरेक्शन क्या मिलेगी? एबीसी मिलेगी. सो हियर विल बी राइट ऑप्शन हियर डी ओनली बाय यूजिंग आवर लेंज लो. Now see next question, the selectivity of the series LCR as this one question of your related to your AC alternating current. तो कह रहा है कि the selectivity of the series LCR सर्किट AC के अंदर क्या होगी? लार्ज होगी. कब? दिस वन LCR सर्किट के अंदर क्या होता है? लार्ज होती है. मींस इसकी जो आपकी क्वालिटी फैक्टर होता है, बैंडविड्थ होती है, वो इंक्रीज करती है तब ये होता है. और ये कंडीशन कब होती है? जब आपका L इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है. L मींस योर इंडक्टर इंक्रीज करेगा, इंडक्टेंस इंक्रीज करेगा और R डिक्रीज करेगा, तब हमारी सिलेक्टिविटी LCR सर्किट के अंदर इंक्रीज हो जाती है. LCR सर्किट मींस व्हेन इंडक्टर, कंडक्टर and your resistance all we are connected in series, then this one circuit is known as a LCR circuit. Okay, now next question here, the phase difference between the current and voltage in the series LCR circuit at the resonance. Then the phase difference we have to find out between your current and voltage in series. LCR सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज सीरीज के अंदर रेजोनेंस कंडीशन है. कौन सी कंडीशन आपकी? रेजोनेंस. तो इसके लिए सेंसर के लिए फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द रेजोनेंस. रेजोनेंस होता क्या है? तो रेजोनेंस के लिए हमें पता है कि Z इक्वल टू योर अंडर रूट योर XL माइनस योर XC होल स्क्वायर माइनस योर R, दिस वन योर R स्क्वायर. क्लियर? फेज डिफरेंस क्या कहता है कि अगर आपका करंट और वोल्टेज LCR सर्किट के अंदर रेजोनेंस कंडीशन है. रेजोनेंस कंडीशन मींस XL रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है? XL इक्वल टू योर XC. XL इक्वल टू XC. तो XL इक्वल टू XC हो जाता है, तो इस कंडीशन पे Z हमारा क्या बन जाता है? R के इक्वल बन जाता है. Z will be equal to your R only. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है? फेज डिफरेंस. जब हमारा Z जो कंप्लीट सर्किट अगर रेजिस्टेंस सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है, दिस सर्किट इज योर रेजिस्टिव सर्किट,
सो इस केस में हमें पता है कि दैट इज अ फेज डिफरेंस फॉर द रेजिस्टेंस ओनली, देन ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0 ओनली। ओके, फेज डिफरेंस रेजिस्टेंस के लिए, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देन ऑलवेज विल बी इक्वल टू 0। तो हमारा सर्किट कैसा है रेजोनेंस कंडीशन पे, रेजिस्टिव सर्किट और रेजिस्टिव के अंदर फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। सो हियर राइट ऑप्शन विल बी डी ओनली। नाउ दिस वन इज आवर लास्ट क्वेश्चन। When an alternating voltage E equal to E naught sin omega t is applied to a circuit, then current will be equal to sin omega t plus pi by 2 flows through it. Then if here E equal to this one, our case is 3 cases, E equal to your E naught sin omega t, दिस वन इज आवर इनपुट वोल्टेज। अगर ये इनपुट वोल्टेज हम सर्किट को देते हैं तो हमारे पास 3 टाइप की इक्वेशन बनती है। वन विल बी आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, सेकेंड ईयर आई इक्वल टू ईयर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, एंड थर्ड विल बी ईयर आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। Clear? So here phase difference will be this one, then this one here R, this one here for the L, and this one here for the C only. So here average power dissipated, इस केस के अंदर जो पावर आती है then P equal to your I RMS into your RMS. Okay? AC के अंदर जो पावर बनती है वो आती है हमारे पास I R cos phi, यहाँ पे कैसे फैक्टर आता है, phi का फैक्टर आता है। दिस फैक्टर इज नोन एज द पावर फैक्टर। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। क्लियर? तो ये पावर फैक्टर क्या होता है, इसके अंदर फेज डिफरेंस क्या हो जाता है, फेज डिफरेंस फॉर द रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू यर 0। तो cos 0 अगर पुट करते हैं देन इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू यर 1 ओनली। सो पावर हमारे पास क्या आ जाती है, आर के लिए ये आ जाती है। नाउ फॉर योर एल एंड सी then your power factor becomes here 0, because in that case phi will be equal to pi by 2 and here also phi equal to your pi by 2. So phi equal to pi by 2 अगर हम यूज करेंगे तो cos phi by 2 will be equal to your 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास cos phi equal to your 0 ओनली। तो ये 0 आ जाएगा तो कंप्लीट हमारे पास पावर दोनों केस में क्या रहेगी, 0 रहेगी, एल के अंदर भी और सी के अंदर भी। तो हमारे पास क्या निकाला था, एवरेज पावर निकालनी थी। तो ये हमारे पास क्या है, दिस वन हियर इंडक्टिव सर्किट। सो हियर पावर विल बिकम इक्वल टू हियर 0 because our power factors becomes 0. That's why here power also will be equal to 0. So here D will be right option of this one question. I hope you understood what are these all questions PYQ and prepare well for your exams. Then thank you for watching today our video.